Okay, Shobik, first of all, congratulations for your All India rank. And Thank you so as much. you have mentioned in your CV that your hobby is playing cricket, painting, and listening audio stories. So, Mm. playing cricket, last when you played cricket. Uh, so when I was in my graduation, because after that, because of CMA, I don't get that much of time for playing cricket. But yeah, I am very much passionate about painting because I'm a professional painter. So yeah, I'm continuing that. Which kind of art you are doing in the painting? I do mainly sketching. I'm a professional painter and I won more than 100 plus drawing competitions also in states and local level. Okay. Tell me your favorite subject. Uh, in this, Indies is your favorite subject. Perfect. yes, Okay, let's ask questions from Indies only. okay. Okay. Uh, Tell me the number of Indies which covers impairment. In days 36. Indies 36 covers impairment. Then tell me differentiation or difference between the impairment and depreciation. Okay. So depreciation is mainly for the showing the books. Depreciation charge on the assets for showing the books. Yes, so we charge the depreciation because to get the real value of the books at each year end. Because if we not charge the depreciation, then the asset will be on actual cost, not at the value that every year it should be shown in the balance sheet. But impairment is on the basis of the market value. That how what is the market value of the asset? On that basis, we revalute that whether this asset will be on the undervalued or overvalued. On that basis we charge impairment loss or gain. It's called impairment loss. Okay. What is the role of NAFRA for framing or Indies? So NAFRA is a regulatory body which is mainly for mainly to prepare the guidelines and the set of the rules for accounting standards, so that the organizations can maintain and follow this accounting standard and prepare uh, balance sheets on true and fair basis. So, as on the date now, Indies are applicable on each and every company, or are there any exclusions? No, index is not applicable for each and every company. I think there is a certain turnover limit, which if the cross, then index is applicable. Okay. Uh, Tell me, this is just from costing. Okay. Do you know about EOQ? Yes, ma'am. What's its another name? Sorry, ma'am. No, I will not aware of that. Okay, tell me something about EOQ. UQ is a optimum quantity that a company should order, and in that quantity, the ordering cost and the carrying cost will be minimum. That's called EOQ. Okay, over to ma'am. So, Shoubhik, okay. Yes, What is the meaning of Shoubhik? It's a it's Shoubhik or mean Soubhik? Souvik. Bengali, Soubhik. it's Souvik. It's meaning of magician. It's meaning of Magician. magician. Yes, ma'am. Wow. So today my vocabulary enhanced. I learned a new word. Very Okay. nice name. Okay. So Soubhik, congrats for All India Rank 19. Thank you And so much, ma'am. mm, you have done your articleship with Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. What Yes, is ma'am. the profile of this company? It's mainly construction company which mainly in the business of shipbuilding, defense shipbuilding, and also in the manufacturing of the bridges. So this is the main business of the company. Okay. You in your CV, I am reading it that you have processed 1,000 bills ensuring accuracy and compliance with purchase order in terms of Nairo.
Okay. Yes, ma'am. So at the time of doing my role, what you check in the bills? So before processing any bill, I would first go to the purchase order and analyze very deeply that whether any and understand the terms and conditions with the supplier, and then we read that how much that also we also check that the liquidity damages clauses are there or not. If that suppose if the vendor is delay in their supply, so there is any regulation that we can deduct the liquidity damages against the vendor. We also check the security deposit clause is there, that if the suppose the vendor is there compliances to support the security deposit against these like materials. And also we check the tax regulations like the tax code. What is the tax code, and also whether it is like is state IGST or it's a CGST, and these things. And also I check that the or number of quantity that because we check the invoices and the purchase order, that the vendor is not claiming excessive quantity from that invoice. So we check these things before processing any bill. And also we check the inspection report before processing any bill, that the materials that provided by the supplier, the proper inspection authority inspects it, and what is their inspection report, that there is any adverse remarks is there or not. So these things we are checking before processing any bill. Okay. Okay. So Soubhik, why in-depth analysis of good receipts or right recording of the good receipts is significant for the purpose of GST law? Because if as per GST law, it's clearly mentioned that if the recipient is not received the bill, received the material in actual basis, he cannot claim the ITC. So this is very much important that he should receive the bill or like receive the material or service in actual before so that he can claim the ITC. Okay. Okay. Three indicators which shows the financial health of the company. So before analyzing the financial health of the company, we should check the ratios, that the key ratios like their liquidity ratios and their liquidity ratio and solvency ratio and activity ratios. On the basis of these ratios, we can analyze that how the company is performing, and also we can check that the profitability part also, that how the company is going on their profitability part. So we can check on the basis of the ratio like profitability ratios. So on the basis of this, we can analyze the financial health of the company. If you get a chance to manage your inventory of the company, any two ideas or two steps or two measures you would like to take? Managing vendor inventory. I will go with the perpetual concept, perpetual inventory management, because regular checking of the inventory is very much important, so that it can easy to physical recognition, physical verification for the inventory. And also I am checking that I also do the proper inventory control system is there or not, that and there is a proper regulation for that inventory management system in the management is What now. kind of regulation? Like they are that like company, if the company is a like on perishable goods, or they are selling perishable goods, they should follow JIT system they on this because they should not say should avoid that there is no should excessive inventory in their system, but otherwise they will face the like wastages and losses. So these kind of things the company should like analyze before managing their inventory. Okay. Okay. Shoubhik, three things which you love about your personality. Three things. Ma'am, I'm very much hardworking. That what I believe on me. And also, as I mentioned that I am a painter, so I believe that I am very calm and detail oriented before doing any work. I'm very much focused on detail. And the last thing is, I I do planning. So I love very much planning for before anything like doing any work. So I am very goal like planning anything, detail oriented and hardworking. Okay. What three things you doesn't like about yours? Sir, sorry, ma'am, I'm not aware of the three things, but I can say one thing, that I am very much over expressive. Sometimes I over express my emotion to others.
So, but I am also working on it to like control my emotions and say and stick to the point answer with someone. Okay. If you get a chance for responding or reacting, what you will opt about anything? Respond or react? I will check. I will react on the basis of the situation. So if the situation is about to is responding is important, then I will respond. And if the situation is reacting, then I will react on that Okay. situation. Okay. IQ or EQ? So difference with IQ and EQ. Do you know what is meaning the IQ? intelligence, like Intelligent quotient and emotional quotient. So, what is more important for being successful in a corporate career? IQ or EQ? Emotional quotient or a intelligent quotient? I think both are important because if we are intelligent but we don't have emotional attachment with others, then it will create a problem for us. So we need also intelligence because without intelligence and this proper skill, we cannot grow in the future. Also, I think both are important for us. Okay, but if you said that we need to be emotional attachment. So, do you think that you can work without any bias if you are emotionally attached with anything in a company? Say, suppose, for example, that you have a very good team and you are attached to one of your colleague who is very good in working, but for the benefit of the growth of the company, you are taking a harsh decision which is not in the benefit of your that colleague, that so-called colleague which you are very much attached. How you will handle that? I believe, ma'am, emotional attachment is not about the personal attachment. It's like that reacting on someone's situation that if the my colleague is facing something very much problem in the work field also, I think I should react on the basis of emotional attachment that I can help him and figure it out how, that what is his situation and how can he overcome from this rather than I'm wait for that he will come to me and asking for the help. That's what I mean by emotional attachment. Okay. Okay. Yes, Diksha. Yes, Shobik, since in Yes, your ma'am. CV you have mentioned about MSME, what is the meaning of MSME? So What MSME are and MSMEs? MSME is micro, small, and medium vendors as per the government regulations, and it's also limit the certain turnover limit, and within which if they operate, they comes under MSME vendors. So as per the Okay, budget 2025, yes, 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 as per the continue, please. budget of 2025, they have the certain limit of the MSME vendor invest in the plant and machinery, and also the turnover specific limit. So if they falls under that category, they will be MSME vendors. Okay, so can you tell me how MSME manufacturing is different from service on the basis of the limit? MSME manufacturing is different from MSME service sector, both the sectors. Sorry, ma'am. I was not aware of that. Okay. And also, since you have mentioned about the SAP, the SAP FICO, what is the posting key and what is the purpose does it serve under SAP FICO? Posting is purpose. Yes. And what is it? So posting is like as I worked in the GRC, so I was working as a posting. So my responsibility is to processing the bill, and the posting responsibility to my senior officers. So Okay. after processing the bill, I hand over to them, and they just analyze the bill and post them bill. So All that's what right. I So, do understand about you the posting. understand about anything about the chart of accountants in SAP FICO? Sorry, ma'am, I'm not aware of. Okay, you don't have any idea. All right. Can you tell me what is the difference between TDS and TCS? Yes, and TDS is TDS is deducted when we payment to the payment to the supplier, and the TCS is that the supplier is collecting from the buyer before pay, with the after
transferring the materials or service to the buyer. What is the main purpose of having TDS and TCS? What is the purpose differentiation between TDS and TCS? The main purpose of TDS and TCS to prevent the tax evasion and early collection and the tax for the government. Okay. And why is there TCS on buying luxury cars? Why there is TCS on that? You are buying a car, you are already doing an expenditure. What is the purpose of having TCS on buying a car above 10 lakh? What logic do you find in this provision? Sorry, ma'am, I'm not aware of that. Okay. Please tell me about the cost audit applicability for non-regulated sectors. Okay, so the not applicability of cost audit for the non-regulated sector is the for the single products the turnover is up to 25 crore, and the aggregate for the aggregate products the turnover limit is 100 crore. Are you sure? Yes, ma'am. And under which table do non-regulated sectors are covered? Table A or table B? Table A. Okay. All right. Can you tell me the difference between cash flow and fund flow? Yes, in cash flow only the cash inflow and outflow for the company over the year are considered, but in fund flow there is non-cash activities are also considered in the fund flow. Okay. And under which cash or fund we focus on working capital? If we should focus on the fund flow if we consider the working capital. Okay. And which one has the long-term view, cash flow or fund flow? Fund flow has the long-term view. All right. What are derivatives? Derivative is a contract which value is derived from an underlying asset. It's maybe like stock. It may be stock. It may be a currency or maybe interest thing also. All right. So futures and forwards are two types of derivatives, right? Is Yes, there ma'am. any difference between them? Are they same? Yes, ma'am. No, there is a difference. Future is What? regulated by the stock exchange, and the forward is not a regulated. It's a like contract or contract formal or maybe informal between two persons. That's the basic. That's the only difference between futures and forwards. Yes, ma'am. This is the main difference between the future and forward. Okay. And under a put option, what is the advantage of having a put option? So the advantage of the put option that if the put buyer has the right to sell the asset if the market price of the asset is on the date of exercising is lower than the contract price, then he has the right to sell the asset to the put buyer. Okay. And what is the cost he has to pay? He has to pay the premium for exercising the put option. All right. Okay. So please tell me what is the TCS limit on LRS, Liberalized Remittance Scheme? Yes, from the TCS limit for LRS is 10% and it excludes the educational loan. 10% for everything, like on every amount, it is 10%, or No, it no, is no. after a limit? After a limit, like, sorry, ma'am, I'm not like recalling the limits right now. All right, no problem. Please tell me who can convene an extraordinary general meeting? Board of directors can convene the extraordinary general meeting, Apart from them? and the shareholders have the voting right of 1% of the
1% voting right or having uh, total 10 lakh of uh, 10 lakh share capital, they have the right to call extraordinary general meeting. Okay. What is the provision regarding MSMEs in the income tax? So as per income tax law, MSME vendor, so the companies have to pay the MSME vendor within 45 days, or if they are in any contract, then the contract they should not be exceed 15 days. So that's the regulation regarding MSME vendors. Okay. Is Otherwise, there if they any pay, turnover limit? What is the turnover limit of having micro and small? Turnover limit for micro. is 10 crore for as per budget 2025. Okay. And for small? Small is 500 crore. For small, it is 500 crore. And for micro, it is 10 crores. Don't you think so that the For the difference is very wide? for the micro is 10 crore. For the small it's 100 crore, and for the medium is 500 crore. All right. What is the form of TDS applicable for the employees, for the salaried person? So they have to pay. So the companies pay deducting the TDS from the employee on the basis of their slab rate at the year end, and the employees have to provide their details, and they can also provide their, if the house property losses, if they have any house property loss, they can also provide these details, and the employer can deduct the TDS on the basis of slab rate. Okay. All right. Yes. In your CV, you have mentioned that you have the skill of time management. How can you justify that? So I manage three things at simultaneously during my CMA articleship, and because I did my articleship in garden shipbuilders, and also I manage my CMA studies, and I also did my MCOM. So I managed both all these three things together, and I also secured the rank in final, and also I did my articleship very well, and also I did not get any supply in my MCOM exam also. But So that's why this is just about your educational background. But in the beginning, you have mentioned that you have stopped playing cricket because of your studies. So what yes, about the ma'am. time management skill there? Why you couldn't manage time, take out time for your hobby? Yes, ma'am. I not able to play cricket, but yes, I am also do my other activities because cricket is my natural activity. It's no, I don't have to take the time for the cricket. But on the other hand, I also Natural manage as the in? natural means I don't have the regulation that I have to do this every day. But on the other hand, I manage my painting also. So I think I manage like any of the my hobbies on that time. Okay. Since you mentioned about painting, what is the world's famous painting? Which one? It's as per And my what is opinion, most it's famous about that painting? The world's most famous painting till now. I think it's Mona Lisa, and Why is it famous? because of the as per my understanding, because of the creativity, because if there is some huge copies in the nowadays, because many people are copies the Mona Lisa, but the emotion that the Mona Lisa original painting it does not have in other painting. That's What what I emotion feel. does she hold? Like the mm, like how people are. I'm not aware of this. Like what emotions. But you said you are a great painter, and because of that, you pay attention to the details, and also you managed painting during your studies, during everything. You take out time to paint. And also, you Yes, have mentioned that you have won many competitions in painting. So, the world's famous painting, the best painting till now in the world, what is famous about it? What made that painting famous? Since you are one amongst them, you are one of the painter. yes, ma'am. Uh, as What I'm not. attention did you pay to the detail of the Mona Lisa?
I think, ma'am, it's about that. Sorry, ma'am, I'm not aware of this. Okay, no problem. And since you reside in Kolkata, can you tell me Yes, who ma'am. is the CM of West Bengal? It's Mamta Banerjee. What is famous of West Bengal? I think there is no many thing about famous about the West Bengal. I cannot say in just into to 5 or 6 minutes because we in Kolkata. I think it's a mini India because everything in the resides in the Kolkata. From if I talk about the geographical part, so it's have mountains and also have the seas and also it's have the mini mountains and the forest also. If I talk about the foods, then the best food in the India, the Kolkata is provide from the sweets also and the meal course also. If I talk about the culture, the Kolkata has the most diversified culture because we have we have the cultures of like that Purulia they have the Mukhosgram culture, and also if I talk about if I talk about the dance form and this all the Ramindo Sangeet is one of the best culture dance form in West Bengal. So I think there is many thing about the Kolkata that yeah I think I also proud for this. So, if you are so much proud of Kolkata, which campus did you opted? Delhi campus Why? because I think my priority is PSUs, so that's why I So, choose Kolkata Delhi campus over Kolkata. do Kolkata campus doesn't have any PSU? No, ma'am, it's not about that because Kolkata campus is held after 1 month of Delhi campus, Okay. and also there are some chances that in Delhi campus because the main headquarters are in of PSUs are in Delhi, so maximum PSUs are come in Delhi campus. So that's why in Kolkata there are we saw that in last few years there are some less number of companies are coming in Kolkata campus. That's why I choose Okay. Delhi over Kolkata. Suppose you get selected for Kolkata as well as Trident. Are you shortlisted in Trident? Yes, ma'am. Which one will you select? Sorry, ma'am. Suppose you get selected in a PSU, say for example, Gale, and also in Yes, ma'am. Trident. Which Yes, ma'am. one company will you select? I will go for Gale. Why? No, why not for Trident as it is offering such a good package? I am not about the money part because I am not focusing on the money. I am focusing on my stability and also so that I can focus on my other activities apart from my full-time job. So that's why I choose Gale over the Titan. Okay, okay. Thank you, Shobhik. This was it from my side. Okay. You said you want PSU because you want a stable life. You want to continue other activities with the job. So what do we think that you're not focused about contributing towards the company, you're just thinking about yourself, the stability thing, the other activities you want to do with the job. As per my understanding, that stability is not about like focusing on the other activities rather than my job. I think the there should be a balance between a personal life and the professional life. And if we get the time for my our personal life also, we can more focus on the job. So that's I want to make a balance between my personal life and professional life to get into a PSC. Okay. ठीक है शौविक Yes, ma'am. सो कॉस्टिंग के आंसर आपने लगभग ठीक दिए थे फ्रॉम माय साइड जो मैंने आपसे गुड रिसिप्ट वाला क्वेश्चन पूछा था वो ठीक था बट इन्वेंट फाइनेंशियल हेल्प के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स P&L फाइनेंशियल बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी अच्छा, की मैंने उसके भी अंदर चला गया था कि अल्टीमेटली रेशियो निकल गया वो हाँ थोड़ा बैलेंस शीट क्वेश्चन मुझे समझ में इन्वेंट्री एक्चुअली वाला मैम थोड़ा सा भी प्रिपेयर नहीं था अभी लाइक बाहर में था और मेरा अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है घर में इसलिए थोड़ा लाइक हो गया मेरा मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू अप टू द मार्क नहीं रहा इसलिए नहीं वी आर गिविंग द फीडबैक आई वुड नॉट से कि अप टू द मार्क है या नहीं बिकॉज हैव यू जॉइंड एनीवेयर एल्स दिस कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम कहीं ट्रेनिंग वगैरह आपने किया है आपके रिजल्ट के बाद अभी तक नहीं नहीं मैम अच्छा मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ या दैट इज द रीजन
अदरवाइज आपका एकेडमिक पार्ट अच्छा है या कुछ सवालों का जवाब अगर आपने ठीक नहीं भी दिया है तो वो क्योंकि बिकॉज योर आप अपने आपने प्रिपेयर किया और यू आर जस्ट अपियरिंग इन दी मॉक, तो वहां पे थोड़ी कमी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक कर लेंगे। ओके। अभी यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि थ्री स्ट्रेंथ, मतलब आपके आपके बारे में क्या अच्छा, आपने ठीक बताया। व्हाट आर दी फ्लॉज इन यू, आपको अपने बारे में क्या अच्छा नहीं लगता है, तो ट्राई टू मेंशन कोई दो तीन चीजें ढूंढिए जहां पर आपको लगता है, क्योंकि वीकनेस हर व्यक्ति की पर्सनालिटी में होती है। ये क्वेश्चन ना मैं प्रिपेयर कर नहीं पड़ा, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि वीकनेस बताओ तो बताओ क्या है। लाइक पहले वो एक जनरलाइज आंसर प्रिपेयर कर लिया था कि वो अटेंशन टू डिटेल वो होता है ना, लाइक कि बहुत डिटेल ओरिएंटेड टू टाइम चला जाता है, उसके बाद मैं उसको प्रायोरिटाइज कर रहा हुआ जो जनरलाइज आंसर सभी देते। तो उसके बाद पीपीओपी में एक सर ने बोला कि ये आंसर मत दो, मतलब इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये एकदम जनरल आंसर है। उसके बाद से मैं पूरा कंफ्यूज हो गया कि बोलूँ क्या इसके लिए, वीकनेस के लिए तो थोड़ा, इसलिए मैंने लाइक रेडी नहीं था इस आंसर के लिए। जो भी आपकी जेन्युइन वीकनेस है, जो भी आपको लगता है कि हाँ इस चीज की वजह से समथिंग और दी अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लाइफ में, वो आप मेंशन करिए। एकदम जेन्युइन आंसर देना है, बिकॉज रियल देना है ना। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, हम्म। ठीक है, यस मैम। तो आप बोल सकते हैं कि आई बिकॉज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो समवेयर आई फील दैट आई शुड इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मेरे में एक कमी है जो मुझे सुधारनी चाहिए। आई एम ओवर एक्सप्रेसिव, ये मेरे में कमी हो सकती है, ठीक है। आई मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक फिटनेस रूटीन मेंटेन करना, मैं हफ्ते में 2 दिन करता हूँ फिर नहीं करता हूँ, ठीक है। सो आई ओके। एम improving that, I should be more inclined towards my fitness, क्योंकि अगर मैं फिट रहूंगा तभी मैं अपने करियर में अच्छा कर पाऊंगा। तो मैं अगर फिटनेस रूटीन करता हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है बीच बीच में, ऐसा कुछ दे सकते हैं, राइट, ठीक है। ओके। और आपने बोला आप ओवर एक्सप्रेसिव हैं, ये ओवर एक्सप्रेसिव तो नहीं बोलेंगे, ठीक ओके। है ना। अभी हम कभी रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन, मैंने बोला रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, आपने बोला रिएक्ट। रिएक्ट क्या होता है, बिना सोचे समझे अच्छा स्टार्ट हो अच्छा। जाना। रिस्पॉन्डिंग मीन्स थिंक, अंडरस्टैंड। पॉज एंड देन स्पीक, ठीक है। थोड़ा सा यस सुने, पॉज लें और उसके बाद बोले। तो आप अगर कोई बोले आप रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, बोले मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। ऑलवेज मैम। रिस्पॉन्ड। इमोशनल इंटेलिजेंट एंड आईक्यू और ईक्यू बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके। एंड इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, हम इंटेलिजेंट ही तभी होंगे जब आप अटैच नहीं होंगे। जैसे एक डॉक्टर इमोशनली अटैच होता है पेशेंट से, इंटेलिजेंटली काम करता है, अगर अटैच होगा तो अपना सर्जरी कर पाएगा क्या। नहीं। सो हमें कॉर्पोरेट में किसी से अटैच नहीं होना है, वी नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है। So okay, so I'm over expressive, but I want to learn how to express my feeling, and before that I need to learn how to take a pause। मैं कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले मुझे एक पॉज लेना है, यस मैम। ठीक है। तो ऐसा आप कुछ बोले वो ठीक नहीं, अटैचमेंट किसी से नहीं होता, इमोशनल अटैचमेंट कहीं पर भी हमें नहीं चाहिए, ओके। और मैं थोड़ा सा एचआर क्वेश्चंस के ऊपर अपने को वर्क करना चाहिए, हमने आपको बहुत अच्छे से ग्रिल किया है, ठीक है, क्योंकि हम आज आपसे पहली बार मिल रहे हैं, आप हमारे पूरे प्रोग्राम में नहीं थे, तो हम आपकी पर्सनालिटी को नहीं जानते। मीन्स आपके लिए हम एक वैसे ही पैनल की तरह जैसे आप जाकर बैठे इंटरव्यू हो, हाँ देंगे। ठीक है। तो हम जितना हाँ हाँ। आपको ड्रिल कर सकते थे उतना हमने कोशिश की हाँ कि लग रहा था मुझे। तो घुमाएं, आपको इरिटेट करें, आपको परेशान करें, and वो कभी कभी पैनल भी ऐसा होता है। और बिकॉज आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं, ये आप और दोनों वो दोस्त हैं क्या, मधुश्री या शौभिक। हाँ हाँ, सेम मैं एक इंटर्नशिप ही है। जगह पे। ओके, यू हाँ आर हाँ इन हाँ सेम इंटर्नशिप। हाँ, वो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सीवी का फॉर्मेट भी सेम कॉपी किया हुआ है, हाँ हाँ हाँ। राइट। एक ही जगह सो से, मतलब हम लोग एक ही जगह से एक्चुअली, हुगली से दोनों। अच्छा, ठीक है। सो ऑल इंडिया रैंक दिखाइए शोभिक शिट के आगे ब्रैकेट में दिखाइए AIR 19 पैनल सीबी में के जाओ। पहले। शोभिक शिट
मैं एक है ना अच्छा आपको हाँ। हाँ, मैं आपको एक व्हाट्सअप आपके ऑप्शन डी में ग्रुप में मैं आपको एक पिक्चर भेजूंगी, वैसा आप अपने आप मेंशन कीजिए। यानी जब आप पैनल में ओके। जाके बैठे इंटरव्यू पैनल के हाथ में दें तो सबसे पहले दिखना चाहिए कि आप ऑल इंडिया रैंक 19 हैं, बिकॉज आपके सीवी में अच्छी बात क्या है, आप ऑल इंडिया रैंक 19 है, आपकी आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से हुई है। आप दीक्षा मैम उनके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेगी, मेरे क्वेश्चंस का अकेडमिकली आपने सही आंसर दिया। एचआर क्वेश्चंस में कहीं पे फ्लॉ हमें लग रहा है बिकॉज उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा एचआर क्वेश्चन लीक, लाइक मैं अभी ये आपने जो बोला कि मैं स्टेबल लाइफ चाह रहा हूँ, मैं पीएसयू इसलिए चाहिए, मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे अदर एक्टिविटी करनी है, तो मींस आपका एक सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट मुझे दिखता है आपके इन तीन बातों से, कि आप चाहते हैं आप 10 बजे जाएं और शाम के 6 बजे आ जाएं। इसका मतलब आप कंपनी की, यानी आप अपनी बाउंड्री नहीं तोड़ना चाहते ना। आपको अगर रोज अगर 2 महीने 8 बजे तक रोका तो आप बोलेंगे ये मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, ये तो गड़बड़ा रही है। तो कभी भी हाँ। स्टेबल लाइफ नहीं चाहिए होती है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को स्टेबल लाइफ नहीं चाहिए। डायनामिक एनवायरनमेंट में एडजस्ट आई होना। नीड अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू पुश माय बाउंड्रीज। इफ ओके। समथिंग कम्स न्यू टू मी, I want to push my boundaries. I want to learn it. I doesn't counting the hours when I work. पढ़ते समय घंटे ओके। सोचते थे क्या? अगर सोचते तो क्या ऑल इंडिया रैंक 19 आती? नहीं, यू पुश्ड योर बाउंड्रीज ना एट द टाइम ऑफ स्टडीज इन द सेम। तो ये कभी नहीं बोलना है मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए और जॉब के साथ मुझे कोई अदर एक्टिविटी नहीं करनी, ये कॉर्पोरेट वर्ड में बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता कि आप डाइवर्टेड हो, आपको नौकरी नहीं करनी है। आप तो यहाँ पे 10 से 5 नौकरी करके सैलरी लेने आ रहे हो, आपका दिमाग तो कहीं और चल रहा है, आप कुछ भी करो वहां नहीं बोलेंगे। आई वॉन्ट टू डू अ जॉब, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द कंपनी, आई वॉन्ट टू लर्न, दैट्स इट। बस मैं जो हूँ तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पे। ओके। रिलोकेट करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं पर भी रिलोकेट हो सकता हूँ। आई एम ए पैन इंडिया, आई एम एन इंडियन, मैं पैन इंडिया कहीं भी रह सकता हूँ। कोलकाता, कोलकाता के बारे में आपने इतनी लंबी चर्चा की, व्हाट इज फेमस अबाउट कोलकाता? मुझे पता है वो दिल से निकल रहा था, वो सिंपल बोली ना, रसगुल्ला इज फेमस। आई एम अ मिष्टी स्वीट टूथ। मिष्टी दोई। हाँ, मिष्टी दोई इज अ फेमस, रसगुल्ला इज अ फेमस। उससे होगा क्या? अदरवाइज ना, कि कोई आपको पूछे अच्छा 3 अच्छी बातें आपके शहर के बारे में बताइए, तब आप बोलिए, ठीक। अदरवाइज वाई यू आर, आप कोलकाता से बाहर क्यों निकलना चाह रहे हैं, वहीं रहिए। रीजन बिहाइंड इट, सिंपल आंसर से चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। सिंपल आंसर है ना, रसगुल्ला फेमस है ना कोलकाता। इतना एग्जैजरेट इसलिए मैंने करके बोला बताया है तो फिर कि मैं आप ओवर दिल्ली एक्सप्रेसिव हो जाता हूँ कैंपस, कभी कभी। हाँ हाँ बिल्कुल। सो ये यही हुआ कि मुझे लाइक मैं ज्यादा कोई आंसर को खींच देता हूँ। ठीक है। और या दीक्षा, योर फीडबैक। हाँ, see, first of all, your answer about the cost audit applicability was not correct. I'm Okay, not revised. हाँ, it was in table B, and also the turnover limit was not correct, right? Yes, ma'am. I know Apart that this from, question is yes, that is it wrong. is 135, right? 100 Yeah. for overall and 35 for individual. Apart from this, you couldn't answer about the key that I have asked, the posting key, which was a Yes, very ma'am. common question. If you have done work in the SAP FICO, the posting key is a very common answer, that it is a two-digit numeric controlling key. राइट, ये तो मतलब बेसिक है, ये आप एक बार पढ़ के भी उसके बारे में जा सकते हैं। अगर आपने काम नहीं करा है तो वो मुझे नहीं पता, बट आपने Mhm. मेंशन करा है तो मैं तो सैप फीको के बारे में कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ। हाँ। ऑल राइट, फिर Yes, आपने ma'am. जो 43BH इनकम टैक्स का था, दैट वाज करेक्ट, द 15 days एंड 45 days वन वाज करेक्ट, बट द टर्नओवर लिमिट इन दैट आल्सो वाज नॉट करेक्ट। इट इज 5 crores फॉर माइक्रो एंड 50 फॉर स्मॉल, 5 and Yes, yes, 50. ma'am. Okay. Okay, the MSME turnover limit for the income Mhm. tax. Yes, ma'am. All right. Apart from this, आपसे जो मैंने स्टार्टिंग में एमएसएमई का मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस का पूछा था, हाउ दे आर Mhm. डिफरेंट, वो भी आप नहीं, यू कुडंट आंसर दैट ऑल्सो। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यू वाज नॉट एबल टू आंसर टेक्निकल, सो Mhm. प्लीज, और ये सारे टेक्निकल दे वर ऑल फ्रॉम योर सीवी ओनली, राइट? MSME को थोड़ा काम करना है।
Yes, all I could see in your CV was SAP FICO, MSME. In the beginning, also, you have mentioned about SAP FICO ERP. So I have put up हम्म, question from there. yes, sir. तो आप स्पेसिफिकली लिख रहे हो प्रोसेसिंग ऑफ एमएसएमई वेंडर बिल्स इन कंप्लायंस विद द एमएसएमई एक्ट। Hmm. मतलब बिल हम्म, प्रोसेस करने का मतलब देखिए, ये जो बिल प्रोसेसिंग वाला प्रोफाइल होता है ना, ये हम्म, कवर है, कवरेज है सबका। आपको बिल मतलब आपके हाथ में, यानी आपको सब कुछ पता है, सप्लायर कौन है, हम्म, वेंडर कौन है, एमएसएमई एक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हर बिल में कुछ नई स्टोरी होगी। तो या तो पता हम्म, करें या इस लाइन को हटा दें। मैं भी इसको बस स्टडी कर लूंगा। ठीक है। हाँ, एटलीस्ट बेसिक हाँ, लिमिट्स तो आप एक बार स्टडी कर ही लीजिए, बिकॉज मैंने बिल्कुल बेसिक ही पूछा था आपसे, हाँ, मैम एक्चुअली स्टडी नथिंग किया था, इन मैं इन भूल गया डेप्थ। था। हाँ, भूल गया ओके। था एक्चुअली। कोई हाँ, बात नहीं, स्टिल यू हैव 2 days। हाँ, हाँ, ठीक है, आपके 2 दिन है आपके हाथ में, इनफ टाइम है आपके पास, थोड़ा सा डोमेन को ब्रश अप करें। ठीक है। आप अगर अगर आपको लगता है, इफ यू वांट, तो हमारा इट्स योर चॉइस, बिकॉज डोमेन में मुझे फ्लॉ लगा। रिकॉर्डेड कंटेंट हमारा अवेलेबल है, अगर आपको लगता है आप डोमेन रिवाइज करने के लिए वो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इट्स योर चॉइस। नहीं लेंगे कोई बात नहीं, आप अपना पर डोमेन रिवाइज कीजिए, बिकॉज आप ऑल इंडिया रैंक 19 है। और ये मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं, आप ऑल इंडिया रैंक 19 इज अ बिग डील। आप ऐसे ही, आपको आपकी नहीं है रैंक आई होगी, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, बट इंपॉर्टेंट इज दैट शोभिक, कि जब आप पैनल वहां बैठेंगे ना, वो 30 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल। यस मैम। एंड दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग, एवरी रैंक होल्डर, हमारे यहाँ से 8 से 10 रैंक होल्डर दिल्ली कैंपस के लिए जा रहे हैं। तो एक आप हो गए, एक मधुश्री, एक शोभिक, मतलब ऑल ऑफ देम आर शॉर्टलिस्टेड फॉर गेल। हाँ, एंड एवरीवन यस, इज यस। शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्राइडेंट, फॉर द गेल, फॉर द आईओसीएल, और 4 लोग हमारे यहाँ से पीएफसी के लिए भी सिलेक्टेड है। तो मैं भी इस पे सिलेक्टेड हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मधुश्री का तो नहीं आया पीएफसी में शॉर्टलिस्टिंग? उसका ओबीसी के लिए नहीं आया। उसका वो वो बता रहे यूआर थे, हाँ, कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट है। अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड वाला ठीक है, चक्कर पड़ गया। बट थोड़ा सा पीएफसी, 4 कंपनीज आपको लेनी है, ये प्रायोरिटी पे रखिएगा। पीएफसी यूजुअली गर्ल्स को लेके जाती है, इट्स अ हाँ, ट्रेड, पता है। है ना। तो आप पीएफसी के चक्कर में गेल को ना मत कहिएगा। हाँ, हाँ। आप, कई बार ऐसा होता है गेल और पीएफसी सेम टाइम पे आती है, तो आप गेल के इंटरव्यू हम्म, में भी ना बैठे, क्योंकि मेरे को तो पीएफसी में शॉर्ट लास्ट कैंपस में ऐसा हुआ था। एक हमारी हम्म, स्टूडेंट थी, उसकी ईआईएल में इंटरव्यू था, बट 15 मिनट बाद पीएफसी आने वाली थी, वो ईआईएल के इंटरव्यू में नहीं बैठी। अच्छा। पीएफसी का वेट किया, बट पीएफसी में सेलेक्ट नहीं किया। तो अगर ठीक है। गेल, और क्योंकि गेल का आई थिंक प्लांट या कुछ है ना कोलकाता के आसपास, हाँ, हाँ। सो एंड यू आर फ्रॉम दी कोलकाता, तो वो भी एक उनको एज रहता है। तो अगर आपको गेल मिलती है, तो पीएफसी के ऊपर गेल को प्रायोरिटी दीजिएगा। रीजन बिहाइंड इट, आपसे पहले वाले रैंक होल्डर्स भी हैं और हमारे यहाँ से ही हैं, तो अगर उनको चुनना होगा तो वो फिर टॉप वाले रैंक होल्डर लेके जाएंगे, ये ट्रेंड है पीएफसी का। हाँ, 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 मैंने या देखा। फिर गर्ल्स को पिक करेंगे। ठीक है, तो हम्म, छोड़ना मत, अगर गेल मिलती है तो गेल, और अगर ट्राइडेंट में है तो ट्राइडेंट, क्योंकि नहीं ट्राइडेंट मैम, मैं ट्राइडेंट प्रायोरिटी नहीं है मेरा, प्रायोरिटी क्योंकि नहीं है ना आपका, तो पीएसयू हाँ, प्रायोरिटी है। तो ना आप, पीएसयू के लिए नहीं है ट्राइडेंट, लाइक मेरा ट्राइडेंट का वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगा, थोड़ा मुझे इसीलिए। तो नहीं, मेरा आईटी से होटल्स अच्छा लगा। और मेरा लाइक अगर देखा जाए तो पीएसयू में मेरा 3 पीएसयू में शॉर्टलिस्टिंग हुई है, पीएफसीएल, पीएफसी, आईओसीएल, गेल। उसमें से पीएफसी अगर निकल दो, क्योंकि वो गर्ल्स का वो जो आप बोल रहे हैं, तो गेल आईओसीएल है और गेल इसका। रहता है इस साइड। यस, तो ये दो रहा, और मुझे तो प्राइवेट में जाना ही होगा। तो मतलब 4 ऑप्शन अगर मैं अपने हाथ में रखूँ फर्स्ट डे के लिए, तो 2 प्राइवेट आईटीसी होटल से, और एक और प्राइवेट में क्या रखा अभी समझ में नहीं आ रहा, लाइक ट्राइडेंट को छोड़ के। देखिए, मैं आपको ये बोलूंगी कि क्यों आपको ट्राइडेंट लेना चाहिए। देखिए, आईटीसी होटल्स आपको कभी भी मिलेगा। क्यों आईटीसी? पहली बात, आईटीसी होटल्स में पैकेज काफी कम है। ठीक है। हम्म, ट्राइडेंट इसलिए इनिशियली आप ले सकते हो, रीजन बिहाइंड इट, जो ट्राइडेंट है ना, वो आपको 36 लाख का पैकेज दे रहा है। ठीक है, अगर मान लो 36। उनका कुछ बाइफरकेशन भी हुआ तो 20-22 लाख तो देंगे। जब आप वहां से अगला जंप लोगे ना, तो एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि आपको 20-22 लाख का पैकेज मिल रहा है। उसके बाद आपको अच्छा। हाइक मिलेगी। आज आप अगर आईटीसी होटल्स चूज करोगे ना शोभिक, तो क्या होगा, हम्म, आप 11 लाख 12 लाख के पैकेज पे जाओगे, तो उसके बाद अगला पैकेज 2 साल बाद कितना ले लोगे, 14, 15, 16। सो ये यस। एक इनिशियली ना कैंपस से हायर पैकेज पिक कर लेना चाहिए। वो अच्छा।
बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नी अच्छा होता है अगर आपको जॉब में ही रहना है, क्योंकि अगला जंप के लिए आपको पिछली सैलरी स्लिप मांगी जाती है, बोले देखो मेरा इतना पैकेज था तो अब अगला हाइक आपको वैसा मिलेगा। गॉट इट? या got it. सो आईटी और आईटीसी होटल्स में आपको कभी भी जॉब मिल जाएगी, बट आईटीसी होटल्स कभी भी आपको 36 का पैकेज नहीं देगा। नहीं, नहीं। पर ट्राइडेंट और गेल में से चुनना पड़े तो गो फॉर गेल। हम्म, ठीक है, सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं क्या से क्या हाँ, हाँ, हाँ। हाउ यू वांट टू गो हेड। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली सीवी। मैम क्या हो रहा है ना, एक्चुअली अभी जो कंपनी को पर एनालिसिस मतलब पढ़ना होता है, एक्चुअली उसमें मेरा पूरा टाइम चला है, जिसकी वजह से मैं डोमेन में फोकस नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं डोमेन जो मैम एक्चुअली क्वेश्चन पूछे थी, दोनों मैम ही मैं ये क्वेश्चन जानता था, मेरा ये क्वेश्चन ये कि पता फिर है क्या हुआ कि मेरा आपको, मैं बट भूल गया, मैं आंसर ये वो आप हो ये गया था। सोचिए कि कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपसे। बेसिक डोमेन तो, और जो अपने सीवी में लिखा है वो अपने को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 2 दिन है आपके हाथ में, आराम से आप प्रिपेयर कर लो, कोई बहुत होते हैं 2 दिन तो इट्स मोर देन इनफ। और एक बात, आप थोड़ा सा सीवी का सीक्वेंस चेंज करो, मैंने मधुश्री को भी बोला था। करियर समरी के बाद आप पहला तो ऑल इंडिया रैंक 19 ऊपर बोल्ड में दिखाएंगे अपने नाम के साथ ब्रैकेट में, मैं आप व्हाट्सअप भी कर दूंगी कैसे दिखाना है। सबसे करियर समरी के बाद पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिखाइए, अच्छा। उसके बाद दिखाइए अपना सीएमए का क्रेडेंशियल, मतलब कैसे कैसे आपने अटेम्प्ट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन एकेडमिक ओके, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल ओके, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके बाद स्किल्स। ओके। कुछ आपका इंटरेस्ट एरियाज है, आपने लिखा नहीं है ना इंटरेस्ट एरिया, क्यों नहीं, नहीं लिखा? अगर मुझे अपार्ट फ्रॉम सीवी अगर पूछे, इसलिए मैंने उसको लाइक लिखा नहीं था। नहीं, आपको अपना, आप पेंटर हैं, आपको लिखिए आप इंटरेस्ट एरियाज क्या करते हैं आप। उसके बाद आपके पर्सनल पर्टिकुलर्स में आपका मैरिटल स्टेटस जरूर आना चाहिए, अनमैरिड। ओके, हॉबीज को यहां से हटाइए और थोड़ा सा बोल्ड में लिखिए, ओके, ओके। प्लेइंग क्रिकेट। पेंटिंग को सबसे पहले रखिएगा, पेंटिंग, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग। ऑडियो स्टूडियो। और आप क्या स्किल्ड पेंटर हैं क्या? हाँ, मैं तो अभी स्किल्स प्रोफेशन में लिखिए, स्किल्स में लेके जाइए पेंटिंग को। इट्स गुड। अच्छा ये हुआ। कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है कि यू आर मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज। आप पढ़ सकते हैं, आप ऑल इंडिया रैंक 19 लेके आ सकते हैं, और आप एक बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। ठीक है, ओके। एक्चुअली मैम, मैं आप जानना चाहता था कि मैं अभी फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा था कंपनी का, लाइक मैंने 2 कंपनी का किया, गेल और आईएसएल तो मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पूरा ऑडिट रिपोर्ट को मतलब कंप्लीट कर दिया है, ऐसा मतलब किया है, तो मुझे केवल लग रहा है कि बेसिक ज्यादा है। टर्नओवर देखिए, बेसिक टर्नओवर क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट ला रही है और कंपनी क्या प्रोडक्ट में डील करती है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा नहीं, इतना थोड़ी आपसे कोई इतना इनफ है। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर अबाउट टू क्लोज। और कैसे पता लगा आपको डीसीसी के बारे में? हाँ, लाइक 2-3 दोस्त थे जो डिसीजन, लाइक जिबेंद्रो किया था आपसे, हाँ, आप लोगों से। जिपेंद्र। हाँ तो, हाँ तो उससे मैंने पूछा था कि मेरा लाइक एक मॉक इंटरव्यू चाहिए मुझे, लाइक मैं खुद से प्रिपरेशन पूरा नहीं हो रहा है, लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने बोला, वो बोला कि तुम मॉक इंटरव्यू अभी परचेस करते हो, टाइम तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है, तो मॉक इंटरव्यू अभी परचेस कर लो, हाँ, तो उससे पता चला। जिपेंद्रन के एक दोस्त है जगदीश दास। हाँ, जिवेंद्रन हमारे यहाँ से लास्ट कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में थे। ओके, सो उनके थ्रू आपको पता लगा। इट्स गुड। देखिए, थोड़ा सा अपने इन सब चीजों पे काम कर लीजिए, यू विल क्रैक द हम्म, इंटरव्यू। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपका ऑप्शन डी बना हुआ है। ठीक है, हम्म, बिकॉज हम मॉक के अलावा, वो हमारा इतना ही काम होता है आपको एक मॉक देने का, बट स्टिल यू आर अ गुड कैंडिडेट। ऑप्शन डी में आप अपनी, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप पुट करें। ओके, ठीक है, वी विल रिप्लाई, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आप बिल्कुल आराम हम्म, से दिल्ली में इंटरव्यू दीजिए। उस दिन भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, कोई बात पूछनी होती है, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। निश्चिंत होके ओके, जाइए, 2 दिन है आपके हाथ में। डोमेन रिवाइज कीजिए, थोड़ा सीवी को सीक्वेंस चेंज कीजिए, क्योंकि आपका हम्म, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा पीएसयू में है, तो इट गिव यू एज, कि क्योंकि आप पीएसयू में काम कर चुके हैं इसीलिए पीएसयू आपको सिलेक्ट कर सकती हम्म, है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। और कोई रिजर्व कैटेगरी है क्या आपकी, या जनरल में आते नहीं, हैं? नहीं, जनरल जनरल आता है। हाँ, ठीक है, फिर तो हम्म, ठीक है। ठीक है।
सो रिलैक्स रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, अच्छा कर रहे हैं, और थोड़ा सा डोमेन रिवाइज कर लेंगे तो काम हो जाएगा। थोड़ा कंपनी एनालिसिस कम कर दो और डोमेन में ज्यादा फोकस हाँ, करो। थोड़ा इतना नहीं पूछेगा आपसे कोई, आपसे थोड़ी कोई, वही आप हो गया मेरा, ऑडिटर है क्या? यही प्रॉब्लम हो गया। 2 दिन से लाइक यही कर रहा हूँ भाई, आईओसीएल और गेल में मेरा पूरा एक दिन 2 दिन चला गया, तो इसलिए मेरा जो मैम क्वेश्चन पूछ रहे थे वो एमएसएम ये सब मुझे पता था, मैं भूल गया पूरा एकदम। इसीलिए हमने अभी बोला, लग रहा है। हम पहले सोच रहे थे आप लोगों को 14th को लें, बट बिकॉज आप हमसे पूरे, इट विल वर्क। और जो जो पेंटिंग को लेके उतना क्वेश्चन पूछ रहा था एक्चुअली, वो मैं थोड़ा फंबल कर दिया, मतलब उतना उसमें करना चाहिए, मतलब करेगा पीएसयू। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपके पैनल में हूँ, मुझे भी पेंटिंग का बहुत शौक है, मुझे बड़ा मजा आएगा आपसे सवाल पूछने में, होता है, इट हैपेंस। हाँ, ओके। ओके। ठीक है, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके, टेक थैंक यू। केयर।